Hi everyone, welcome back to Arijeet Talk Sports. This is Arijeet and आज हम बात करने जा रहे हैं Real Madrid versus FC Barcelona. Which team is the bigger mess? So without further ado, let's get into it. I'm very excited, hope you are too. So पहले बात करते हैं मेरे प्यारे चहीते Real Madrid के बारे में. Last week after they beat Barcelona in the El Clasico, I made a video on them. If you're interested, do check it out. I'll link it down in the description box below. So basically in that video I said कि Real Madrid जो है जो basic चीज़ जो lack करती है वो है consistency. And I said despite beating Barcelona, I was just unhappy with the team because I think कि वो consistency नहीं दिखा रही इस season. Last season भी consistency नहीं दिखाई थी और मैंने बोला था कि there are many holes in this team which Cristiano Ronaldo used to cover up when he was there. After Cristiano Ronaldo left, all these holes have been exposed. And even Modric has fallen off. तो वो और ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो गया रियल मैड्रिड के लिए. एंड रियल मैड्रिड हैव फेल्ड टू साइन द प्लेयर्स दैट कैन कम इन एंड अप्रोप्रिएटली फिल इन दोज होल्स. Even Eden Hazard isn't performing. So he was signed hoping that he could make a difference for Real Madrid. But he has been a complete failure. Not the man that he was at Chelsea. And I also said कि Real Madrid को ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो अपने दम पे अपने बैक पे पूरा गेम बदल सके. रियल मैड्रिड के लिए स्टार प्लेयर्स जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो था. आप उस पे मतलब you can rely on him to change the game in Real Madrid's favor in the most crucial situations, and that is what these big teams need. और ये दोनों बात जो मैंने लास्ट वीडियो में बोली थी, lack of consistency and lack of players who can change the game on their backs, on their own violation for Real Madrid, दोनों नहीं है. ये फुल डिस्प्ले पे था इस वीकेंड जब रियल मैड्रिड रियल बेटिस गई और रियल बेटिस से हारी. They lost 2-1 to Real Betis. And Real Betis dominated for most of the game. I mean, Real Betis definitely deserved to win that game. Real Madrid were lackluster. They were all over the place. They were faltering. Well, clearly, I'm very frustrated with my Real Madrid team. Now, it's not like that Real Madrid didn't have chances. People will argue that Real Madrid had chances, during the game, especially in the second half, जहाँ पे एक शॉट उनका क्रॉसबार पे लगा. After Modric took a shot और उनके गोलकीपर ने बॉल बचाया, उन्हें रिबाउंड मिला, शॉट मारा, उन्होंने क्रॉसबार पे लगा. Okay, but Real Betis had more chances. They created more chances. Especially first half में मार्क बाट्रा के पास एक फ्री हेडर था जो उसने ऑफ टारगेट मारा. So Real Betis played better than Real Madrid for most of the game. Real Madrid lacked inspiration and they lacked players जो कि फिर वही change कर सके matches. Look, people like everybody was looking at each other. Nobody showed what like कि हाँ मैं बदलूंगा गेम. No, किसी ने वो दिखाया ही नहीं कि हाँ मैं बदलूंगा. We have been waiting for Gareth Bale to show up. Gareth Bale, तो obviously I think he's done at Real Madrid right now. Modric खत्म हो चुका है. Benzema, I have always said he is a good striker. He can get goals, but he can't get goals in the biggest moments. बहुत बार वो fail कर जाता है. जैसे कि कल भी, we needed something from him. We needed goals, but हमें वो नहीं मिला. Rodrigo, Vasquez, Asensio, Vinicius Junior, ये सब अभी रेडी नहीं है. ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे रियल मैड्रिड के लिए. एंड एज रियल मैड्रिड फैंस इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी योर टीम्स नॉट गेट गोल्स व्हेन दे नीड देम. डिफेंडर्स के बारे में बात करते हैं. मार्सेलो हु हैज बीन द बैकबोन ऑफ रियल मैड्रिड्स डिफेंस और जो कमाल का लेफ्ट बैक रहा है, असिस्ट करता है, गोल्स मारता है रियल मैड्रिड के लिए, ही वाज कंप्लीटली डिसअपॉइंटिंग. एंड इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग टू सी वन ऑफ रियल मैड्रिड स्टॉलवर्ड्स फॉल ऑफ अ क्लिफ्स. और इतना बुरा परफॉर्म किया कल. It's sad to say this about Marcelo because I have tremendous respect for him and tremendous love for what he has done for us as Madrid fans. But कल वो अच्छा नहीं खेल पाया. फील्ड में मॉड्रिच उतने अच्छा नहीं कर पा रहा है. सर्जियो रामोस की एज हो रही है. मार्सेलो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है. रियल मैड्रिड गोल्स कंसीड कर रहे. So clearly there is complete lack of players who have motivation, who have character, और जो कि and I'm not saying that they don't want to win or anything, but it's just that वो दिख नहीं रहा है वो किलर मेंटालिटी कि हाँ आज मैं रियल मैड्रिड का शर्ट पहना हूँ, आज मैं रियल मैड्रिड के लिए गेम बदल दूंगा. और वो इनकंसिस्टेंसी दिख रही है. and I've always believed this कि elite teams और normal teams में difference है consistency की जो elite teams है वो consistently वीक इन वीक आउट मैच इन मैच आउट परफॉर्म करती हैं.
एंड रियल मैड्रिड एकदम उस सिनेरियो में एकदम मतलब पास भी नहीं है रियल मैड्रिड अभी. एंड दिस इज नॉट जस्ट मी, दिस इज एवरी रियल मैड्रिड फैन राइट नाउ. वी आर जस्ट फ्रस्ट्रेटेड. लास्ट 2 years से एटलीस्ट वो फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा सेट इन कर गई है और ग्रो कर गई है. You know, we want to see players signed who can come make a difference. Hazard has been a flop. And wingers में हम विनीसियस जूनियर और वास्क्वेज और रोड्रिगो को बनाने की कोशिश करें, but they're clearly not ready right now. करीम बेंजेमा को हम रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं और हमारी डिफेंस भी अब गोल्स कंसीड कर रही है. केलर नवाज को भेज के हमने थीबो कॉर्टुआ को मंगवाया, बट थीबो कॉर्टुआ हैज ऑब्वियसली बीन लेस देन परफेक्ट टू से द लीस्ट फॉर रियल मैड्रिड. सो हर जगह प्रॉब्लम्स है. एंड इस समर इफ रियल मैड्रिड डोंट साइन प्लेयर्स दैट कैन कम इन एंड मेक अ डिफरेंस एंड दैट कैन कम इन एंड फिल द होल्स, these gaping holes that Real Madrid, you know, absolutely do need to fill real quick if they want to be elite again, if they want to, you know, compete with, you know, the best teams in Europe again, and they plan to winning the Champions League and the La Liga again. They just have to perform, and they just have to, you know, sign these players that we need, so that the team improves, so that the mentality improves, and so that the results improve. बहुत हो गया मेरा रियल मैड्रिड रैंट. अब बात करते हैं बार्सिलोना के बारे में. तो बार्सिलोना इस वीक रियल सोसिएडाड के साथ खेल रही थी, जो कि टेबल में 6th है. ओके, सो दैट्स अ गुड पोजीशन फॉर रियल सोसिएडाड टू बी एट. सो मतलब कि वो अच्छा परफॉर्म कर रही सीजन. Barcelona had many chances throughout the game. They were completely frustrated, weren't getting those goals. 81st minute controversial penalty मिली Barcelona को. Real Sociedad, you know, were very unhappy with the decision. Messi ने goal score किया, Barcelona जीत गए. Lucky them. They're top of La Liga right now by 2 points, leading Real Madrid. So, but problem कहाँ है Barcelona? People were unhappy with the Barcelona performance despite the win, and you know, justifiably so. So I think one major problem, obviously, we should start with the Luis Suarez injury. He is clearly the second best player on the Barcelona lineup. और उसका इंजर्ड हो जाना, बार्सिलोना इतना हेविली डिपेंडेंट है उसके ऊपर गोल्स के लिए, असिस्ट के लिए, एंड उसका इंजर्ड हो जाना और नहीं खेल पाना, यू नो, इट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर बार्सिलोना. इसकी वजह से गोल्स उतना नहीं मार पा रही है, एंड यू नो अटैक में यू नो थोड़ा सा क्रिएटिविटी लैक कर रही है, और यू नो कंपोजर लैक कर रही है, और गोल्स लैक कर रही है इन जनरल. सो यू नो बार्सिलोना का लुइस सुआरेज प्रॉब्लम है. फिर दूसरी तरफ आपका प्रॉब्लम है एंटोइन ग्रीजमैन, जो कि एटलेटिको मैड्रिड से साइन किया गया इस होप में कि यू नो ही विल कंप्लीटली चेंज थिंग्स फॉर बार्सिलोना, एंड यू नो ही विल परफॉर्म एट द सेम लेवल दैट ही डज फॉर एटलेटिको मैड्रिड एंड फ्रांस. You know, he's a great player. No offense to him, but at Barcelona, he's clearly not shown up. You know, sometimes he comes in with good performances, but you know, most of the times वो नहीं परफॉर्म कर पा रहा है. जैसे कल बार्सिलोना को बहुत ज़रूरत थी उसके शो अप करने की, उसके गोल मारने के लिए, बट वो नहीं कर पाया, जो कि वो वीक इन वीक आउट करता था एटलेटिको मैड्रिड के लिए, एंड हर मेजर टूर्नामेंट में करता है फ्रांस के लिए. वो बार्सिलोना के लिए नहीं कर पा रहा है, कल भी नहीं कर पाया. सो ओके, सुआरेज इज इंजर्ड, ग्रीजमैन इज नॉट प्लेइंग वेल. ब्रैथवेट आया है, जो कि आई डोंट नो, लाइक ही हैड अ फ्यू चांसेस this weekend, but obviously he has to fit in with the Barcelona lineup, जो कि मुझे लगता है भी थोड़ा समय लगेगा, and plus he's not the most talented, you know, player Barcelona could have signed obviously. Midfield पे आ जाते हैं, तो I think one big problem that I have with Barcelona's midfield is Frankie de Jong. So Frankie de Jong he's young, he had a phenomenal season with Ajax Amsterdam last season, where they went to the semi-final in the Champions League and barely lost to Tottenham Hotspurs. तो जो फ्रैंकी डी योंग है, जब से बार्सिलोना आया है, I mean, he hasn't been the guy he was at Ajax Amsterdam. He hasn't been his best, so that's another problem, another headache for Barcelona. And that's another reason why Barcelona haven't been able to perform at their very best. और बाकी players के बारे में बात करते हैं, Arturo Vidal, Sergio Busquets और even Rakitic midfield में, तो वो लोग बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे. I mean, they haven't been able to make, you know, big differences in these big games. Even Rakitic, I think, is a great player, and obviously, you know, he has turned in some good performances, you know, even this season. But, you know, sometimes he's not being able to show up, so that's a problem, because he used to be one of the most important players for FC Barcelona. Arturo Vidal be unimpressive. I think he was, you know, much better at Bayern Munich and Juventus than he's been at Barcelona. Or Sergio Busquets, I mean, he's been average. Let's just admit that. But, you know, still, जब डिफरेंस मेक करना होता है, जब यू नो कंट्रीब्यूशन देना होता है, सर्जियो बुस्केट्स इज ऑलवेज देयर. समटाइम्स ही हैज बीन लैकिंग. डिफेंस आई थिंक, यू नो, पोरस रहा है, समटाइम्स बहुत ज़्यादा गोल्स कंसीड कर रहा है, बट इट्स नॉट लाइक इट्स इन द वर्स्ट शेप. फिर भी अच्छा है डिफेंस. Marc-Andre ter Stegen is obviously a good goalkeeper, so I don't have any complaints there. But the main complaint, you know, the complaint that I have with this team is the lack of chemistry. I mean,
मैचेस में आप देखोगे दे डोंट सीम टू बी ऑन द सेम पेज एवरी टाइम, और मतलब लग रहा है कि केमिस्ट्री नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और उतना हंगर नहीं दिख रहा है कि जो पहले के बार्सिलोना टीम में आप देखोगे दे यूज्ड टू गो इनटू एवरी मैच वेरी हंग्री टू विन, और वो चीज नहीं दिख रहा है, वो लैकिंग है बार्सिलोना. सो दैट्स व्हाट आई थिंक इज द प्रॉब्लम विद एफसी बार्सिलोना. ये तो बात हो गई इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स की. मीन रियल मैड्रिड के प्रॉब्लम्स के बारे में हमने बात किया, फिर एफसी बार्सिलोना के बारे प्रॉब्लम्स के बारे में हमने बात किया, बट विच टीम इज इन द बिगर मैस? एंड बात इससे रिलेटेड हम ये क्वेश्चन भी आंसर कर सकते हैं, विच टीम इज गोइंग टू विन ला लीगा दिस सीजन? वेल, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि रियल मैड्रिड आर इन अ बिगर मैस. सोल रीजन बीइंग कि उनके पास मतलब कि हर जगह होल्स हैं जो उन्हें फिल इन करने हैं, और उनका जो बेस्ट प्लेयर, सपोजिटली बेस्ट प्लेयर साइन किया गया एडन हजार्ड, वो रोनाल्डो की जगह नहीं ले पा रहा है. गैरेथ बेल जो कि एक बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, वो कुछ नहीं कर रहा है. तो रियल मैड्रिड का टैलेंट, हामिस रोड्रिगेज कुछ नहीं कर रहा आफ्टर बीइंग री-साइंड. सो जो रियल मैड्रिड का टैलेंट है बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा है. एंड द बिग डिफरेंस इज दे डोंट हैव अ प्लेयर लाइक मेसी. एंड लियोनेल मेसी जो है इस सीजन, जो कि मैंने उसके जैसे मैंने आपने देखा कि प्रॉब्लम्स के बारे में मैंने जब बात की, मैंने मेसी की बिल्कुल बात नहीं की, बिकॉज मेसी अगेन हैज बीन एट हिज फेनोमेनल बेस्ट. ठीक है, मेसी बहुत सारे मैचेस में गोल नहीं मार पा रहा है, बट he is the inspiration of the team. He looks most likely to score. He is providing assists. He looks the most determined out there on the field. कल अगर आप सैटरडे के मैच में भी देखो तो he had the most chances. I think Messi is the biggest difference between Real Madrid and FC Barcelona. Real Madrid के पास कम टैलेंट है, एंड टैलेंट है जो कि अब ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है बार्सिलोना के टैलेंट से. प्लस बार्सिलोना के पास मेसी है, जैसे रियल मैड्रिड के पास रोनाल्डो था जो कि उसकी होल्स को फिल कर देता था, और उसके प्रॉब्लम्स को दिखने नहीं देता था. उसी तरीके से बार्सिलोना के पास मेसी है, who is always there to pull them out of desperate situations, who is always there to give them inspiration when they need it the most. So because of Messi, and because of having superior talent, and because of having talent who are in performing better than Real Madrid's, I think Barcelona are in a smaller mess. Real Madrid have bigger problems to tackle, and Barcelona, unfortunately, in my opinion, are going to go ahead and win the La Liga title this season. They might even go deep into the Champions League. Actually, I mean, 1-1 draw kiya unhone first leg mein, so they might even go deep into the Champions League. And Real Madrid are going to go out at the hands of Manchester City because they're 2-1 behind already, and they need to go to the Etihad to play the second leg. As Real Madrid fans, बुरा समय है, इसलिए मैंने इस वीडियो में इतना रैंट किया रियल मैड्रिड के बारे में, एंड बोला कि there are changes that need to be made in the summer, and there are important signings that need to be made, and there are problems that need to be fixed. Thanks for watching. Comment करो, आपको क्या लगता है, बार्सिलोना बिगर प्रॉब्लम है या रियल मैड्रिड बिगर प्रॉब्लम है, और आपको ऐसा क्यों लगता है, और आपको क्या लगता है who will win La Liga this season? और बताओ कि क्या आप मेरे ओपिनियन से, या आप मेरे ओपिनियन से कितना अग्री करते हो. Thanks for watching. Hope you enjoyed. Please like, comment, share and subscribe. See you guys in the next one.